हेलो नमस्ते एवरीवन। थोड़ा हिएटस के बाद वी आर फाइनली बैक। हाँ, मैंने थोड़ी ब्रांडिंग पे एक्चुअली पिछले हफ्ते काम किया, तो ये इंट्रो और ये अभी तो फाइनली अभी आई एम ऑन अ स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर। आई डोंट नो इफ वील कीप द करंट वन और वील गो टू अनदर वन, बट अभी के लिए तो मैंने इसमें सेटअप कर दिया है सब कुछ। सो मैं नाम वाम नहीं लूँगा, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ यू हु watch a lot of YouTube videos, you'll probably guess कि मैं अभी कौन से वाले पे हूँ. Um, Long story short, this one is a bit expensive, so I'll have to really see कि यार थोड़ा एक आध थोड़ा सस्ता वाला देखना पड़ेगा. बट अपना अपना OBS भी बुरा नहीं है, बट ऑनेस्टली आई हैव टू गिव इट कि ये जो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर यूट्यूब वगैरह पे आ रहे हैं, they're actually quite good. They make life a lot easier. um, जैसे ये जो इंट्रो प्ले करना है, it'll just do it on its own. It'll ensure कि मेरा माइक ऑलरेडी म्यूट पे है. ये सब it's already sort of it's all built in, तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता. But other than that, hope everyone is doing well. I'm trying out something new with the channel now. इसको मैंने बोला है नगेट. तो ये अलग प्लेलिस्ट में जाएंगे ये सारे वीडियोस. एंड ये नगेट का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली इट्स एग्जैक्टली व्हाट सम ऑफ यू मे बी थिंकिंग कि इट्स जस्ट वन टॉपिक, छोटा सा डिस्कशन. आई एम गोना ट्राई एंड मेक श्योर कि ये 30 मिनट से ऊपर ना जाए. एंड ऑफ कोर्स अगर चैनल की थोड़ी रीच बढ़ती है, कुछ भी होता है, देन वी विल look into कि okay, question answers and everything. But personally I will keep my yapping to about 30 minutes. उससे ज़्यादा I won't do it. But again, it'll be one topic and it'll be more than one piece of content with that one topic. But it'll be think of these as a shorter deep dive. एक topic ही होगा. And it won't be as deep as the deep dive ones, but it won't be cluttered with too many different types of topics that we generally discuss in the daily dose of news lives. चलिए आज का शुरू करते हैं. तो ओके, लेट्स गो हियर. Actually, this one is this one I'm starting off as ki the first one um, on this Nugget series because ये ये मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा. I am actually very glad that this has happened. I don't deny it. मतलब मैं कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ कि आई एम हैप्पी. लाइक ये जो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है, ये मुझे समझ में ही नहीं आया कभी. I mean, since the advent of social media, I'm not saying social media before anyone thinks कि but ये तुम सोशल मीडिया के खिलाफ बोल रहे हो, तुम खुद सोशल मीडिया पे बैठे हो. हाँ, मैं सोशल मीडिया पे बैठा हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है ये करना. बट since the advent of social media, the biggest challenge that we are facing is how to sort of get off it. कि थोड़ा अपना एक्सपोजर कम कैसे करें. क्योंकि आप हर समय, क्योंकि देखिए आपकी अगर जॉब है, जैसे मेरी है, फुल टाइम जॉब है अभी. एंड आप नौकरी परस्त इंसान हैं, तो मोर ऑफ्टन देन नॉट आपकी जॉब होगी कि एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आप 9 घंटे बैठे रहो. उसके बाद आपको अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है. तो हो सकता है कि आप डिनर खाते खाते भी टीवी लगा रहे हो, लंच खाते खाते टीवी लगा रहे हो, जो भी है. टीवी ऑल्सो बिकम्स अ बिग पार्ट ऑफ लाइफ. मतलब टीवी एज इन मे बी नॉट द क्लासिकल चैनल वाली सर्विसेज, बट टीवी स्ट्रीमिंग सर्विसेज, जो आपका नेटफ्लिक्स आपके टीवी पे चल रहा है, एप्पल टीवी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है. तब भी आप एक वीडियो देख रहे हो. फिर आप सोशल मीडिया भी कंज्यूम कर रहे हो, तो हाफ द टाइम मे बी you're watching something, or maybe you're just listening to hopefully you're listening to this podcast as well sometime soon in the future. But इतना ज़्यादा स्क्रीन एक्सपोजर हो गया है कि it's it's literally making people
less and less adept at handling social situations. I I mean, I don't want to reveal too much about where I work and what I work as currently, but the idea, the industry I'm in requires a lot of interaction with a lot of people all the time. Matlab, if you had to consider a spectrum of, it's an internally focused job, maybe एक beginner software engineer है जो ज़्यादातर अपना काम करता है, अपने git commits करता है, खुश रहता है, उसको ज़्यादा he or she may not have to be interacting so much with other people. But my job is the polar opposite. I have to constantly be interacting with people. And I also manage teams. So I'm also a lot of times providing instructions to the team that okay how we want to proceed with something. तो मेरे जॉब में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है. So I cannot even afford to lose such skills. And I'm saying this is just my personal example, but this is something that the society is struggling with. हर समय, I understand you want hyper personalization. I'm actually not against that, in the sense कि personal, you have a right to enjoy the stuff you want, right? कि ठीक है आपको YouTube आपके मतलब के वीडियोस फेंके जा रहा है आप enjoy करो. बट ये मत भूलो कि जो YouTube पे दुनिया है, जो Netflix पे दुनिया है, वो भले ही रियल लोगों ने क्रिएट की हो, बट वो रियलिटी का एक बहुत नैरो स्निपेट है, बहुत नैरो है वो. एंड दिस इज समथिंग आई वांट एवरीवन टू कीप इन माइंड. So, apart from the fact that, okay, they burned through $77 billion, but I mean, I'm not saying Meta should keep making such decisions, but इस company का valuation trillions में है. I think क्या 2 trillion की company है ले दे के. So $77 billion, one project failed. ठीक है कोई नहीं. They'll bounce back from it. But anyway, इस आर्टिकल को थोड़ा देखते हैं. Proposed changes are part of Meta's annual budget planning for 2026. तो 2026 से वो बेसिकली कह रहे हैं कि अब हो गया, और मेटावर्स नहीं. And the company plans to shift spending from the metaverse to AI wearables, according to a person familiar with the matter. This is, well, it was expected, right? कि कुछ AI related ही budget allocation आएगा. That was not really a surprise. But up now they're going to go into AI related wearables. So this is where Meta will face competition from a lot of people. Already in the market, Apple Watch है, पता नहीं अपना Fitbit भी बनाता है, Garmin भी बना रहा है, Fossil भी शायद स्मार्ट वॉच बना रहा है. Obviously the other big ecosystem is Samsung, तो वो भी वॉच बना रहा है. तो uh, it's going to be a tough cookie for Meta to crack, especially because Meta में ecosystem नहीं है इतना strong. I'll honestly say that. क्योंकि I don't even use the Facebook app. किसी ने बर्थडे कुछ ऐसे विश कर दिया तो जाके देख लिया, एंड टोकन जाके रिस्पॉन्स कर दिया तो कर दिया. Some marketplace is something I use, but Facebook as an app अभी वो तो बस बोझ ही बनी बैठी है फोन में. ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे तो मैं हूँ ही, अभी क्या करे. एंड ऑफ कोर्स व्हाट्सएप के बिना जिंदगी नहीं चलती है ज़्यादा, especially if you're living in North America and you have people who are still using Android phones. So so WhatsApp is essential, and WhatsApp also has made international calling so easy, right? अब beta plan है तो बस enjoy. तो बट वो ये कि आप पूरे, बट what else does it offer? जैसे एप्पल का इकोसिस्टम ऑफर्स अ होल ऑपरेटिंग सिस्टम. आप उनका लैपटॉप ले सकते हो तो आपको मैक ओएस मिलेगा, आप आईफोन में आईओएस मिलेगा, एंड देन द मैक ओएस इज अ फुल्ली फंक्शनल ओएस जिस पे आप, आई एम डूइंग दिस लाइव स्ट्रीम फ्रॉम अ मैकबुक. सो
इट मेटा का वो है नहीं, सो व्हाट विल बी देयर वैल्यू प्रोपोजिशन? नाउ आई नो कि उनके रेबैन में, रेबैन जो ग्लासेस हैं, दे हैव अ पार्टनरशिप विद स्पॉटिफाई, सो इफ यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक, देन यू कैन कंट्रोल योर स्पॉटिफाई app through the glasses or through the meta quest. So actually as a product I really like meta quest, मैंने ट्राई किया हुआ है, बट अगेन उसकी मुझे यूटिलिटी नहीं दिखती है, बट ऑल्सो आई एम, जस्ट टू बी क्लियर राइट, आई एम नॉट अ गेमर, तो मेरे लिए तो ज़्यादा यूटिलिटी इन चीज़ों की वैसे ही नहीं होती. इफ आई एम नॉट इनटू गेमिंग, then it just becomes a very sophisticated kind of home theater. And personally, when it comes to watching movies, I would rather do it, the old school way, कि जैसे मैं एक अच्छे लाउंज चेयर पे बैठा हुआ हूँ, एक होम थिएटर में मूवी देख रहा हूँ. आई काइंड ऑफ लाइक दैट. पर्सनली आई फील कि ये जो सारे डिवाइसेस होते हैं, आफ्टर अबाउट एन आवर और सो दे स्टार्ट फीलिंग हैवी, चाहे आप उन्हें लाइट ही कर लो बाय द स्टैंडर्ड्स. एक्चुअली मेटा क्वेस्ट इज नॉट दैट हैवी, बट इट स्टार्ट्स फीलिंग आफ्टर अ वाइल कि जो पहना हुआ है यार मैंने, मेरे it just starts feeling a little claustrophobic inside. Not just MetaQuest. I'm not just going after one. I'm not talking about one product here. I'm just talking about any big such bulky wearable. But then of course the challenge is, अगर आप ऐसे टाइप के चश्मे में पूरा एक स्क्रीन यूनिवर्स एम्बेड कर रहे हो, बट मैं नीचे देखूंगा तो मेरी रियलिटी मुझे दिख जाएगी. तो I I personally feel that I'm glad that they have stopped this after burning $77 billion. हिंदी में कहते हैं देर आए दुरुस्त आए. And as we'll see, right, चलो next वाले पे जाते हैं कि as we'll see, investors are closely watching. नहीं क्या, um, investors actually, इसी आर्टिकल में लिखा होता है, investors actually welcomed it. You know, AI has emerged as the primary focus of the broader tech industry. इस पे भी अभी जाएंगे हम, but tech executives believe AI will reshape how consumers interact with tech as well as how the industry makes money. Um, how consumers interact with tech? Yes. Uh, Again, my hunch is there will, and I work in a very B2B space, business to business space. So there are well established products in the market that everyone likes using. जैसे आपको ईआरपी सिस्टम लेना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स लेते हो, या आप एसएपी लेते हो, या आप ओरेकल लेते हो. एआई इनमें एम्बेड हो तो उसका यूज केस ज़्यादा आएगा. अगर आप एक स्टैंड अलोन एआई बेस्ड ऐप बनाओगे तो बी टू बी स्पेस में आपको क्रैक करना मुश्किल होगा, क्योंकि आप एक नए बिजनेस को, 50 लोगों की भी कंपनी हो, आप मान के चलो कि इसे हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, इसको करने में आपको 1 साल लग जाएगा. मान लो कोई कंपनी है, आप एक्सेल यूज कर रही है अपने हर पूरे बिजनेस के लिए, नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग मैसिव ग्रोथ. सो टिपिकली दे से ओके अब हमें एक ईआरपी लेना है, तो या वो कोई छोटा वाला ले लेंगे, और इफ दे आर एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक एंड दे आर लाइक ओके लेट्स गो ऑल इन, देन दे विल गो फॉर समथिंग मोर सोफिस्टिकेटेड. छोटे से छोटी कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन करना फ्रॉम एक्सेल टू लेट्स से एन ईआरपी सिस्टम, मैं आई जस्ट टेक एन एग्जांपल, 50 यूजर्स हैं उस कंपनी में ईआरपी के, आप 1.5 साल मान लो आराम से. क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उनका अभी क्या हाल है, और वही फिगर आउट करने में 3-4 महीने निकल जाते हैं. उसके बाद आप बोलते हो कि अच्छा आपकी ये रिक्वायरमेंट है, अच्छा इसके हिसाब से, चलो मान लो उनको ये भी पता है कि उन्हें कौन सा ईआरपी लेना है, तो भी बात करते करते ये सब होते होते सब एक ईआरपी सिस्टम आ जाता है 1.5 साल बाद. अब आप बोलोगे ये मेरी रही ऐप, इसमें मैंने एआई डाला हुआ है, आप प्लीज इसे यूज करो, भूल जाओ, नहीं होगा. क्योंकि कोई कंपनी जिसने ऑलरेडी 1.5-2 साल, मान लो चलो 1.5 साल इन्वेस्ट किया है एक ईआरपी सिस्टम डालने में, वो आपकी ऐप नहीं लेगा.
हाँ, अगर आपने एआई अपने नॉर्मल ईआरपी में, जैसे ईआरपी वेंडर ने एआई अगर अपने उसमें अपने सॉफ्टवेयर में एम्बेड किया है, then they'll be open to adapting. उसमें then the primary issue becomes data residency. But other than that, um, again, this would again Meta is not a company that is in the B2B space. They are in a B2C space, जो हम लोग बोलते हैं business to consumer. तो उनके लिए खैर, I would hope that a lot of their AI will get embedded. Well, it already exists, right? मतलब आपकी पूरी Facebook ऐप में AI बैठा हुआ है, WhatsApp में भी. So, and of course, Meta AI is there on all Meta products. So, whatever you call their LLM based AI. So, they are gonna get into wearables. It'll be tough for them to crack it because Meta doesn't have its own OS. अब आप एंड्रॉयड बेस्ड कुछ बनाओगे तो फिर लोग नॉर्मल जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उससे क्यों हटेंगे. एंड फिर वो हो जाता है फॉर्म फैक्टर, क्योंकि वेरेबल में ऑब्वियसली मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये एप्पल वॉच, ये यूज़ नहीं हो रही है अभी, बट ये एप्पल वॉच सीरीज 8 है. तो अब इसमें आप कितना ही एआई डाल दोगे, आप दुनिया भर का एआई डाल दो इसमें, तो ईसीजी ये सब पता नहीं एप्पल ने क्या क्या निकाला था, इसमें बहुत मसाला है. बट अनलेस देयर इज समथिंग वाइल्ड दैट कम्स आउट ऑफ दिस, राइट, मतलब एकदम पागल कर देने वाला कि एक हॉलोग्राम है जिससे पूरा वो वॉल पे प्रोजेक्ट हो जाता है, फिर मैं टाइप कर सकता हूँ, मैं उसका कुछ काम कर सकता हूँ, या मैं उस पर एक फुल स्केल गेम खेल सकता हूँ, चाहे सबवे सर्फर्स ही खेलने को मिल जाए अपनी वॉच पे, तब तो मैं सोचूंगा कि हाँ ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी यूजफुल. एंड अगेन आई एम गोना ऑब्वियसली, अगर आप लोग मुझे देख रहे हो तो आपको पता होगा अब मैं गार्टनर हाइप साइकिल भी लाने वाला हूँ इसमें, क्योंकि फिर वो हो जाता है कि इतने छोटे से डिवाइस में आप प्रोसेसिंग पावर कितनी ही बढ़ा लोगे, अगेन ऑन द करंट प्लेटफॉर्म. द अदर वे ऑफ कोर्स इज कि आप इसको क्लाउड से कनेक्ट करो, कि आपके सारे मॉडल क्लाउड पे बैठे हैं और आपका जो वेरेबल डिवाइस है दैट्स जस्ट एन इंटरफेस बिटवीन द क्लाउड का मॉडल वर्सेस आपको एक छोटा सा यूआई दे रखा है. तो बट फिर अब आपकी ऑब्वियसली लिमिटेशन हो जाती है कि आप अगर ऑनलाइन नहीं हो, आप एयरप्लेन में घुसे गया सब कुछ. खैर अब तो चलो, लॉट ऑफ फ्लाइट्स, लॉट ऑफ एयरप्लेन्स आर नाउ कमिंग आउट विद वाईफाई पैकेज दे देते हैं, थोड़ा पैसा ले लेते हैं, जो भी है इवेंचुअली इट बिकम फ्री, क्योंकि वो ही होता है, व्हेन एवरीवन स्टार्ट्स ऑफरिंग इट देन everyone else doesn't have a choice but to offer it. So it'll all we'll get there, that you'll be using internet throughout your flight and everything. But ये सब challenges हैं जो wearable format में आएंगे. Of course मैं यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, मेटा में तो they are paying them $100 million to figure out all these things. तो they obviously know, their engineering challenge, and this would be worth seeing because Meta में Meta as a company has has always been very fascinating to me. मतलब मुझे, of course Facebook तो खैर was the social media platform जिस पे हम सब बड़े हुए हैं उसको यूज़ कर करके, तो it was always a very it was an enjoyable platform while it was at its peak. मतलब मज़ा आता था चैट करने में, सब करने में. It was good while it was there. It's still there, मतलब marketplace तो है ही. But again, in this space, with the at least with the wearables, assuming it's some sort of a watch or something, they're going to face massive competition. And I know इसी आर्टिकल में एक्चुअली वो मैंने स्निपेट नहीं डाला है, बट इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि uh, their Ray Bans are picking up. I also would like to get one of their Ray Bans. It's not like I don't want to try the product. Um, but again, whenever I think of having too much AI in a wearable, like not the watch wearable, but a face wearable like this, like glasses, I'm always reminded of Google Glasses and the way they went, right? एंड पर्सनली फॉर मी, सिंस मतलब मैं तो चश्मा पहनता हूँ, मुझे तो पावर वाला चाहिए, तो
आप उसमें पावर भी एम्बेड कर दो, जैसे विजन प्रो में यू कैन एक्चुअली गेट lenses fitted for your eyes and everything, एप्पल विजन प्रो में। तो आप अगर वो भी डाल दो आपके रे बैंड्स में, फिर भी it's still everything said and done, it's still a little bit of a safety hazard. At least at the point where we are with AI right now, right? कि आप हाउ डू यू इंश्योर कि मैं सड़क पे रोड, मतलब मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, दैट एआई इज नॉट इंटरफियरिंग विद माय विजन। आई नीड टू बी एबल टू सी कि रोड है, गाड़ी आ रही है, मेरा वॉक साइन ऑन हुआ, ऑफ हुआ। हाउ डू यू मेक श्योर दैट हाउ डू यू मेक श्योर दैट AI never ends up interfering, not even by mistake, because उस context में आप mistakes बनाई कर ही नहीं सकते हो, right? So of course there'll always be कि आपने technology है, so it's called 11 nines, yeah, 99.99999% of the time it'll work, and at some point it'll just become acceptable as an industry standard कि okay, if the chances of failure are 1 in a trillion or something, कि okay, you can put it in production. I don't know those standards. There is obviously a limit to what, there's always a tolerance limit basically, चाहे आप रॉकेट बना रहे हो, चाहे आप कंज्यूमर एआई बना रहे हो, there's always a tolerance limit. And of course, whenever you introduce a tolerance limit, nothing is 100%. So ठीक है. But of course, I guess that's why Meta is paying their AI engineers and researchers, AI specialists, $100 million. They are the ones who will take on this behemoth of a task to come up with usable AI wearables, along with the fact that okay, you're gonna get people used to a different ecosystem, because of course अगर आप मेटा का AI wearable पहनोगे तो it it will neither feel like Windows, it'll neither feel like iOS or Mac. It'll feel like Meta stuff, which is, in my opinion, a little to hard to quantify, because Instagram, WhatsApp, and the Facebook app, marketplace, and everything, they feel very different from each other. They are very distinct products. So how do you unify it? Or are you just going to come out with another OS? तो फिर वो ये एक और homework assignment आ गया, थोड़ा उसमें learning curve तो आएगा ही. Um, so let's see how this goes. Um, it looks like as soon as they announced कि यार हम मेटा नहीं कर रहे, हम मेटावर्स नहीं कर रहे, तो एक्चुअली शेयर प्राइस जंप हुए हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ. अरे कोई नहीं, चलो. इट सीम्स लाइक शेयर प्राइस जंप हो गए यार. ये देखो, हाँ देखो, आज 3.43% आज इनके शेयर प्राइस जंप हुए हैं. तो आई वाज लाइक ओके, आई एम नॉट द ओनली वन हु थॉट कि दिस इज अ बैड आइडिया. ठीक है, अगेन देर आए दुरुस्त है, सो शेयर्स जंप मोर देन 3%. ओके, ग्रेट. One thing I want to point out again on the moral front is, with this whole metaverse losing its charm with people, is, man, anyone, even even the, let's call them the Gen Zs, right? इनके भी बच्चे पैदा हो रहे हैं. Some of them are 25, 26 in this age group. So even they are having kids and all. So man, everyone is scared about what the generation will grow up as. I'm not saying that they shouldn't have digital exposure, but man, I would be scared कि अगर मेरे बच्चे को day one से have a bloody black screen in front of them, how will they ever become like sociable creatures? Human beings are social creatures, no matter what we say. They have to be, uh, they have to learn how to interact with their own species. In fact, even other species, आपको कुत्ता लेना है, बिल्ली लेना है, आपको interact करना है ना उससे. Otherwise, you're just a digitally hooked zombie. मतलब इसमें कुछ है नहीं फिर. So I hope that is taken into consideration when the next time someone decides to make a completely virtual universe.
I would say, I mean, this is gonna be extreme, and this everyone's gonna take a hatchet and run behind me, maybe. But if some technology like this ever comes to fruition, where it's, it gives you access to a completely virtual world, it should only be allowed for people who are above 18. Simple. I'm okay with I'm okay with a kid having a smartphone in ninth grade or something. Obviously, मैं ये नहीं कहूँगा okay अब फिर वो ये कि government shouldn't get into something that they don't understand, or this is not government's business. I agree, but as a society we have to be cognizant कि यार 18 से पहले तो अपने बच्चों को ये देना ही नहीं है. No, 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 no. It's 18, maybe even 21. I mean, in North America, the legal age to drink is 21. I would say having a device which is constantly bombarding you with digital stimuli and where you can basically decide every aspect of the environment. You have so much control in this. I wouldn't call it fake, but at the end of the day, it's not real either. It's digital. You will feel that, okay, as soon as you step out of that environment and then something doesn't go the way you would like it to go, you'll get very frustrated very quickly because you don't know how to adapt to something like this. So I would say that, okay, there has to be an age limit before which kids should just not be using this. In fact, kids of any age should not be using this. Only legal adults should be using this. Okay, you can drink. Okay, you can have your VR headset. That's what I would say. If possible, by the time I have kids, okay, I'll try to. Abhi dekhte hoga ya nahi. I'm not gonna make promises, but ideally, I would like to see that happen. Okay, guys, abhi to you're already nearing 30 minutes, but let's quickly go back to this, right? Again, now Meta is going to pivot from this metaverse to just focus on AI enabled wearables, right? And if you haven't seen this enough, I will show it to you again. Gartner Hype Cycle 2025. Let's see when the latest one comes out. But again, if you want to understand what this is, please go watch a lot of my other lives. I've kind of gone over this chart in detail. But again, this time I've put a little different spin to it. And I'm just pointing out some important points in this chart. अच्छा इस पे मेरा वो दिखेगा नहीं किसी को. Okay, so of course in the middle, right, just a trough of disillusionment may, if you guys are seeing, generative AI is already kind of losing steam. It's called trough of disillusionment for a reason. People are like कि यार हो गया अब इसका. इसमें जो यूज कर सकते थे हो गया अभी मतलब. It's everyone thought, okay, it's a big thing. It is a big thing, no doubt, but everyone's used to it. Everyone understands what to do with it. And then for most of the common use cases, people are very familiar. So it's getting to that trough of disillusionment. Interestingly, foundation models and synthetic data are also reaching there. Now, foundation models, the way I see it is, okay, you are building your own deep learning neural net so that it can be applied in a certain way. It has a certain application, and that's reaching a trough of disillusionment, which is very interesting because are we already at a point where we are thinking that you can't really create new useful models at a foundation level? Now, this is where I would like to understand more on how this chart is built. Because if you're not building foundational models, then why is a company like Meta paying its AI specialists $100 million? What are they doing? I'm not saying I understand this. I'm not trying to say that, okay, there has to be something that
that's missing. Of course, the one thing that these researchers will do is um, the one thing these researchers will be doing is how to integrate the two. You have a wearable, you have an AI model, you have a user interface, you have to integrate the two for a pleasant experience. So that's one thing. But again, these are AI specialists. These are not full stack developers, or these are not dedicated to in. They're not necessarily looking at the integration piece as much in detail uh, as a software developer might. So I want to try and understand if foundation models and synthetic data are reaching the trough of disillusionment, then the what is that big thing that AI specialists need to do? That again brings me back to okay, AGI, artificial general intelligence, that's the biggest thing on the block. In the article that I went over, maybe Meta has said that they want to focus more on super intelligence. So general AGI and super intelligence, they are interchangeable. Um, so of course that's one place where they will focus. But again, I will leave everyone with this: quantum. Please remember, quantum AI or just quantum computing in general will be that next frontier where till quantum AI doesn't sort of get to this peak of innovation trigger space, like somewhere here where AGI is sitting today, I don't think this whole concept of super intelligence is possible. You have data centers after data centers. Google has its own processing units. Nvidia, obviously, the biggest kid on the block. They all have traditional graphical user. They have graphical processing units which they are using for AI purposes. Of course, Google uses tensor processing units. That's a different one. But till, but these are all again based on the 0 1, the binary philosophy of a computer. Quantum essentially replaces that, and it says, okay, there is 0, there is 1, and there is 0 and 1. It can assume both the states at once, and that's what makes it much faster. And for AI to get to a point, or for AI to make its next leap beyond Gen AI, beyond your Tesla being able to drive itself, um, for AI to become as realistic maybe as what we used to read in Isaac Asimov's novels, quantum will have to become a massive reality. I know there is something called QPUs. I'm going to try and research more on those and discuss those more in detail. That would be more. That would be more of a deep dive session. I won't be doing one little nugget on it, or I won't be doing a daily dose of news like where I'll just cover it as one topic. I'll go deep into that topic because I really want to explore that with all of you, with this virtual family as well. So yeah, guys, आज के लिए इतना ही. I'm glad Meta has taken a decision कि अब Metaverse को छोड़ के they will try something. But फिर वो ये पूरा नाम बदला सब किया अभी ठीक है होता है. But yeah, let's track this news more closely and I'll keep you guys updated. Chalo, have a great rest of the day if you guys are anywhere in a part of the world where it's morning, or have a great rest of the night for those in North America. Chaliye, bye.